We are done with this, right? So we are done with, that's okay. The growth curves. Okay, so we have two kinds of curves. One is J-shaped, दूसरा is sigmoid. Okay, so when does the J-shaped curve happen? न्यू स्पीशीज, कोई न्यू एनवायरनमेंट में अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत सारा रिसोर्सेस है, नो एनिमीज, नो कंपटीशन, नो डेर्थ ऑफ स्पेस, नो डेर्थ फॉर रिसोर्सेस, उस समय द पॉपुलेशन विल टेक जे शेप कर्व, पर वो इंडेफिनेट नहीं हो सकता. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट शुड से दैट नाउ दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट. उसके बाद क्या होगा, कैरिंग कैपेसिटी टच हो जाएगा एंड इट विल टेक अ स्टैग्नेंट path and the entire curve becomes sigmoid, S-shape. Okay. So the next concept is survivalship curve. Okay. So इसमें एक क्वेश्चन था, usually the question was these organisms have very good parental care. They usually give birth to very few individuals. They have very high mortality at the end of their life, and they take type 1 curve in the survivalship curve. So the above description is regarding which of the following organisms. So चार option दिया था. This was a question which I saw in some what was that exam, CAPF or some other examination. Examination question था, not from UPSC, some other examination. So इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शंस था. सो इट वाज इटेरोपोरस, हेटेरोपोरस, सेमलपोरस एंड मेगापोरस. ओके, सो ऐसा चार ऑप्शन था. वी शुड नो विच ऑर्गेनिज्म विल टेक टाइप 1 कर्व, उसको क्या बोलते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड व्हाट आर दोस थिंग्स आर, राइट. सो वंस आई एक्सप्लेन दिस, आपको समझ में आएगा कि लाइक व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट. देखो, द एंटायर ऑर्गेनिजम्स विल बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. ऑर्गेनिजम्स विच टेक type 1 curve, type 2 curve and type 3 curve, right. देखो, एक कर्व जो है, दिस इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग एंड ये एज है. सो लेट अस डिस्कस अबाउट टाइप 1. जो ऑर्गेनिज्म टाइप 1 कर्व लेते हैं, सो अगर 1000 इंडिविजुअल्स आर born, more or less all the individuals will survive. They will survive as the age progress. अगर humans का देखा तो 0, 100 years. So till the 60-70 years there will be 1000 individuals, then they'll decrease, some people start dying, and at the end of their lifespan they will die. So ये organisms का survivability beginning of the birth पे ज्यादा रहता है, and as the age progress they will die at the end of their age. ये usually mammals होता है, and usually they give birth to very few individuals, 2, 3, 4, 5, and they have very good parental care. बहुत अच्छी तरीके से अपना बच्चों का देखभाल करते हैं, and these organisms are following the type 1 curve. अभी type 2 छोड़ के type 3 डिस्कस करते हैं. So these are the organisms जो they give birth to certain numbers and maximum death happens at the beginning of the lifespan. Maximum death होगा और बहुत ही कम individuals बचेंगे, and जो individuals बचेंगे they will continue till the end of their life. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है मस्किटोस. मस्किटोस कितना एग्स ले करते हैं? अगर 1000 एग ले करते हैं, उसमें से 10 या 20 ही
सर्वाइव कर पाते हैं, एंड रेस्ट एवरीथिंग विल डाई, एंड दे डोंट केयर अबाउट इट, दे आर नॉट हैविंग गुड पेरेंटल केयर, अपना बच्चों के ध्यान नहीं रख. फ्रॉक्स, फिशेस, दे डोंट केयर अबाउट देयर थिंग्स, दे जस्ट ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स, उसमें कितना बचा कितना नहीं, दे डोंट केयर, एंड जो भी छोड़ा बहुत बच गया तो दे विल सर्वाइव टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ, राइट. जैसे कि ट्रीज में अगर सोचो कि 100 सीड्स प्रोड्यूस हो गए, क्या, सो देयर इज अ ट्री विच प्रोड्यूस्ड 100 सीड्स एंड ऑल दिस 100 सीड्स आर डिस्पर्स्ड. उसमें से 10-20 ऐसे जगह पे गिरेंगे जहां कोई सॉइल ही ना हो, किसी रूफ के ऊपर गिरेंगे, किसी पत्थर के ऊपर गिरेंगे, they'll fall on some leaf matter, okay, leaf litter बोलते हैं, so उसके ऊपर, and around 60-70 will actually fall on the ground. उस 60-70 में से around 40-50 will actually go inside the soil, बाकी सब सॉइल के ऊपर ही रहते. सॉइल के ऊपर रहा तो सीड जर्मिनेशन नहीं होगा, उसको सॉइल के अंदर जाना चाहिए. 40-50 will go inside, and उसमें से 20-25 ही जर्मिनेट करेंगे, बाकी सब जर्मिनेट ही नहीं करेंगे, बिकॉज दे मे बी इनमेच्योर, दे मे नॉट गेट सफिशिएंट मॉइस्चर, दे मे बी ईटन बाय सम रोडेंट्स, ओके, कोई एनिमल उसके ऊपर पैर रख दिया, क्रश हो गया. सिर्फ 20 या 25 ही उसमें जर्मिनेट करते हैं. उस 20-25 में से जो जर्मिनेट करते हैं, ओनली 5-10 विल एक्चुअली ग्रो इनटू अ सीडलिंग. बाकी छोटे उम्र में ही some animals will crush it, some animals will eat it, and 5 या 10 में से 2 या 3 ही दूसरा पेड़ बनेगा, it will grow into a full tree. अभी 100 seeds में से what is the survival percentage? 2%, 1%, 2%. Those are the organisms which take type 3 curve. Okay, so these are the organisms. Then type 2 curve का जो organisms है, these organisms, the beginning of the life and the end of the life is not dependent on their mortality. कुछ individuals starting में मरेंगे, कुछ बीच में मरेंगे, कुछ end पे मरेंगे, and they will have a sloped curve. Example, birds. अब चिकन अंडा देगा तो उनको पता नहीं ना ऑमलेट बनेगा या चिकन 65 बनेगा, कुछ भी बन सकता है. इट कैन डाई एट द बिगिनिंग ऑफ द थिंग, यहीं पे मर सकते हैं, एंड इट कैन डाई एट द एंड ऑफ देयर लाइफ, कुछ भी हो सकता है. सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स वेयर देयर मॉर्टेलिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर एज. सब एज में ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ डेथ्स होगा. स्टार्टिंग में भी कुछ डेथ होगा, बीच में डेथ होगा, लास्ट में भी डेथ होगा. रैबिट्स आर अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ type 2 curve. These are the type 3 types of curves. Okay, so write down this survivalship curve. Survivalship curve. Okay. Survivalship curve is a graph. Survivalship curve is a graph which indicates the proportion of individuals in a given species that are alive at different ages. Okay, at different ages. There are 3 types of survivalship curve. Simply referred to as 3 types of survivalship curve, simply referred to as type 1, type 2 and type 3.
Okay. So first, type 1 curve. Okay. So क्या लिखेंगे इसमें? These are the organisms whose survivalship is very good at early and middle age. Early age में और middle age में they have very good survivalship, and the survivalship will drastically reduce at the end of their life. Mortality will be very high at the end of their life. जैसे इंसान में भी जैसे जैसे वो उम्र होते जाएगा, जो 75 80 प्लस का है वो ऐसे टपकते रहेंगे ना, एक के बाद एक के बाद. बहुत ज्यादा डेथ होगा आफ्टर 80. ओके, सो उम्र हो गया, चलते रहेंगे. सो बट मिडिल और अर्ली एज में बहुत सारा है. ये ऑर्गेनिजम्स दे ब्रीड सेवरल टाइम्स इन अ ईयर. ओके, in their lifespan, and they give birth to very few individuals. जैसे कि इंसान हो गया, elephants. Okay, so these organisms have very good parental care. बहुत अच्छा देखभाल करता है. You have seen how the elephant looks after their calves. So एकदम साथ में रख के एकदम वो पूंछ पकड़ के रहता है. They'll take them everywhere. They'll feed them. So dogs, they have very good parental care. Lions, tigers, cobra. Okay, king cobra. King cobra is the only snake which builds nest for its eggs. Okay, egg lay karta है and it take care of their young ones very nicely. Okay, so that's the thing. Even tiger looks after their cub very nicely. वो खाना hunt करके it will bring it to their young ones. So these organisms are called as heteroparous organisms. Heteroparous organisms बुलाते हैं. Okay, that is called, they take type 1 curve. Okay, so write down this type 1 curve. It shows the individuals that have high probability of surviving through early and middle life but have a rapid decline in the number of individuals surviving into late life. Okay, a rapid decline in the number as they survive to the late age. Okay, they produce few offsprings or young ones. And breed several times in their life. Breed several times in their life. They have very good parental care. And are called as heteroparous organisms. Okay, heteroparos. So कौन सा कर्व लेंगे? What is this curve? Concave or convex? Convex curve. They take convex curve on the graph. Okay, type 1 is plotted as convex curve on the graph.
सो क्वेश्चन में यही रहेंगे. सो जो टाइप 3 ऑर्गेनिजम्स है, सो उसका ऑपोजिट है. दे ब्रीड मोस्टली वंस इन देयर लाइफ टाइम, वेरी लो पेरेंटल केयर, ठीक है. दे प्रोड्यूस सेवरल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट वन टाइम. एक बार में बहुत सारे बच्चे देंगे. हैव यू सीन हाउ द फ्रॉक्स विल रिप्रोड्यूस, हाउ द फिशेस, कितना एग्स लेंगे फिश एक बार? 100-200. insects mostly, okay, so they all breed many times, only once, but एक टाइम में बहुत सारे एग्स लेस करेंगे. उसमें बहुत ही कम बचेंगे, बाकी सब इंस्टेंटली मर जाएंगे. A very few individuals will be surviving at the early stage. Maximum mortality happens at initial stage. Okay, जैसे पैदा हुआ सबसे ज्यादा डेथ मोर्टेलिटी इनिशियली होगा. जो सर्वाइव करेंगे दैट विल मूव ऑन टू द एंड ऑफ देयर लाइफ. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज सेमल पैरस ऑर्गेनिजम्स. ओके, टाइप 3. सो उससे पहले टाइप 2 लिखेंगे हम. इसका एग्जाम्पल्स लिख लो. ह्यूमंस, एलिफेंट्स, और कौन सा एग्जाम्पल है? कैन यू गिव एनी वेरी गुड एग्जाम्पल? कैट्स. कैट्स बोलते हैं कि अपने बच्चे को ही खा लेता है सबसे पहले. दे ईट प्लासेंटा, ओके, नॉट द किड. पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि बिल्ली ने अपने एक बच्चे को खा लिया. सुना आपने? ओके, इफ दे गिव 9 kids, 1 they will eat up for energy. यही जनरल थियरी है कि अपना खुद का बच्चा खा लेता है. बट दे विल नॉट ईट द किड, इट इज द प्लासेंटा विच दे ईट. ओके, सो कैटल, हाँ, काउस, बफेलोस बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं. नो, दे विल टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस वेरी नाइसली. काउस, बफेलोस. ओके, डॉग्स, हाँ, गोरिल्ला, हाँ, गोरिल्ला. These are the concept समझ में आ गए ना? Okay, you can give many examples. आप जैसे पढ़ते रहेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, wherever you come across anything, instantly you will connect with your basics. कि हाँ, ये this is a heteroporous, this is semalporous. Okay. So type 2. Type 2. These organisms show constant mortality rate for the species through its entire life. Okay, through its entire life. Stop. It means the individual's chance of dying, chance of dying is independent of their age. Stop. They are plotted as a diagonal line going downwards on a graph. ग्राफ में they will be going downwards. Okay, इसका कोई specific नाम नहीं है. These organisms doesn't have a specific name. You can write examples.
ducks, okay, birds, okay, ducks, birds, rabbits. Then type 3. Stop. These organisms have very high death rate, in the early stage of their life, okay, very high death rate at the early stage of their life. Stop. Very few individuals will live to adulthood, very few individuals will live to adulthood and die as they get older. So जो बचा हुआ ऑर्गेनिजम्स है वो फाइनली उम्र की वजह से मर जाते हैं, बट ओनली वेरी फ्यू ऑफ देम विल सर्वाइव because maximum mortality happens at the initial stage of their life. Okay. They produce large number of offsprings. Breed once in a lifetime. And have very low parental care. बहुत ही बदतमीज पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते और केयर नहीं करते हैं. जो बचा, नहीं बचा तो कोई मतलब नहीं. ओके, राइट. They are called as semmelparous organisms. Example, क्या लिखोगे? Mosquitoes, frog, okay, scorpion. अच्छा, वो भी ध्यान नहीं रखते. बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस करते हैं क्या? अच्छा, एंड बहुत सारे इनिशियली मर जाते हैं. हाँ, इनिशियली यूजुअली क्या होता है, फिशेस एंड ऑल, सो दे डाई इंस्टेंटली आफ्टर गिविंग बर्थ. जैसे सिल्कवर्म हो गया, क्या बोलते हैं, रेशम का कीड़ा. ओके, वो जैसे ही एग ले करेगा इट विल डाई. हैव यू हर्ड ऑफ दिस फिश कॉल्ड एज साल्मन? क्या है उसका टेस्ट के अलावा, क्या जानते हो उसके बारे में? टेस्ट छोड़ दो, टेस्ट के अलावा क्या जानते हो? थर्मल पोल्यूशन की वजह से साल्मन, अभी एक रिसेंटली आर्टिकल आया था. सो स्पॉनिंग ऑफ साल्मन एक फिनोमिना है. स्पॉनिंग साल्मन फिश. सो क्या होता है, साल्मन फिश यूजुअली जो एग ले करते हैं, दे आर लेड ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर. एक कोई रिवर का बैंक में, सैंड में एगले होता है. एगले होते ही जो मदर साल्मन फिश है वो मर जाते हैं. ओके, सो द एग्स विल हैच. छोटे छोटे फिशेस जो टॉड्स हैं वो नदी में आ जाते हैं एंड दे विल स्टार्ट स्विमिंग इन द वाटर. एंड नदी में बहते बहते दे विल मूव टुवर्ड्स ओशन एंड दे विल स्टार्ट बिकमिंग बिगर एंड बिगर. वो अपना मॉर्फोलॉजी बदलना शुरू कर देते हैं. दे विल टेक शेप ऑफ लाइक लिटिल बिग फिश, फिर अदर, देन बिग फिश, अच्छा साइज का बन जाता है. यूजुअली जो फिशेस होता है
दे विल बी आइदर फ्रेश वाटर या फिर सलाइन वाटर, या समंदर का मछली होता है या नदी का मछली होता है. दे कैन नॉट मिक्स अप. बट साल्मन इज वन सच फिश which takes birth in fresh water, river water. They will travel and complete some part of their lifestyle in life in river water, fresh water. Then they will jump into oceans. वो fresh water से salt water में jump कर देते हैं and they will survive. जैसे नदी जाके मिलेगा समंदर में, they will start surviving there. So they will spend some more part of their life in the ocean water. And when it is time for breeding, उनके लाइफ के आखिरी स्टेज में, they will again jump back into the river. Okay, they will swim against the flow of river flow. अगर river ऐसे बह रहा है तो उसके against में swim करेंगे. आपने देखा होगा कुछ फिशेस नदी के जो धारा है उसके अपोजिट में तैरते रहते हैं. So they will swim against it and they will visit the place where they are born, जो उनका मायका होता है. So the place where they will come there, they will lay the eggs and instantly die. क्योंकि वो पूरा जितने भी एनर्जी है वो नदी के ऑपोजिट डायरेक्शन में बहने के लिए खर्च करके, they don't have any more energy, एग ले करके they will die. This is called as spawning of salmon fish. अभी थर्मल पोल्यूशन से क्या हो रहा है, they are not able to do this. वापस जा ही नहीं पा रहे. एक्वेटिक एनिमल्स में एक कैरेक्टर होता है, दे यूजुअली ले द एग्स वेयर दे आर बॉर्न. ओके, या फिश हो गया या टर्टल्स. एक टर्टल है जिसका नाम है ऑलिव रिडली टर्टल. सुना आपने? कहां पे आते हो? ओडिशा में ऋषिकुल्या बीच के, जो ऋषिकुल्या में जो गोहरमाता बीच है ना, सो दैट इज द वन ऑफ द 3 प्लेसेस ऑन द प्लैनेट वेयर दिस ऑलिव रिडली टर्टल does the mass nesting. ऐसे 3 ही जगह में पूरा वर्ल्ड में जहां ऑलिव रिडली टर्टल्स एग ले करते हैं. सो वन ऑफ देम इज इन इंडिया, इन ओडिशा. हर साल ऑलिव रिडली टर्टल्स दे कम इन नंबर ऑफ थाउजेंड्स. फीमेल अलग से आते हैं, मेल अलग से आते हैं. दे विल ब्रीड, दे विल ले द एग्स ऑन द बीच, सैंड के अंदर. सो एग हैच होता है. सभी टर्टल्स, छोटे 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 टर्टल्स, दे विल वॉक इनटू द ओशन एंड दे विल मूव इनटू द ओशन. So they will spend their life, जब वो बड़े होते हैं, when they want to lay egg, they'll come back to the same place where they are born and they will lay the egg. Okay, so this is called as mass nesting of olive ridley turtle, जो हर साल होता है in the month of February. Okay, so this is the thing, and these organisms, fishes, frogs, okay, oysters. What is oyster? मोती जानते हो? मोती किसके अंदर पाया जाता है? ऑयस्टर के अंदर. ऐसा होता है ना, सीप. दैट इज ऑयस्टर. वो भी बहुत सारा बच्चे पैदा करते हैं. 2022 में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन ऑयस्टर. किसने देखा? क्या था क्वेश्चन? Which of the following is filter feeders? 4 ऑप्शन दिए थे, ऑक्टोपस, ऑयस्टर्स, जेलीफिश, देयर इज वन मोर. फिल्टर फीडर कौन सा? ये क्वेश्चन था 2022 प्रीलिम्स में. सो ऑयस्टर इज ए फिल्टर फीडर क्योंकि उसका पैर, पूंछ कुछ नहीं होता. दे आर सेसाइल, मतलब मुंह नहीं कर सकते. दे कैन नॉट गो बिहाइंड द फूड. फूड हैज टू कम टू देम. जो भी पोल्यूटेंट्स है ना, जो न्यूट्रिशन भरा हुआ पानी, वो जैसे आता है वो गंदा पानी अंदर ले लेता है, फिल्टर कर लेता है, साफ पानी बाहर छोड़ता है. हमारे लिए वो पोल्यूटेंट है, पर ऑयस्टर के लिए दैट इज फूड. ओके, वो अपने लिए फूड के लिए पानी को फिल्टर करके सफेद पानी छोड़ देता है, साफ पानी, एंड दे विल टेक रिटेन द न्यूट्रिएंट्स. पर हमारे लिए इट इज एक्चुअली डूइंग ए फिल्टरिंग. सो इसलिए वाटर क्लीनिंग प्रोसेस में वी रिलीज लॉट ऑफ ऑयस्टर्स इनटू द टैंक. दे विल क्लीन अप. जितने भी पोल्यूटेंट्स है सबको खा के पानी को साफ कर देंगे, बिकॉज ऑफ दैट इज देयर फूड. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टर फीडिंग. और क्वेश्चन यही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिल्टर फीडर्स. 4 ऑप्शन थे. ओके, सो
राइट डाउन। क्या लिखा आपने? एग्जाम्पल लिखा, फ्रॉग, ऑयस्टर, इंसेक्ट्स, मस्कीटो, ट्रीज, ओके, ऑल दीज थिंग्स, they are called seval-porous organisms. The curve is drawn as concave curve on the graph. The curve is drawn, कौन सा है? Concave curve on the graph. अभी आप आंसर कर पाओगे अगर वो क्वेश्चन मतलब यूपीएससी में अभी तक नहीं आया है? या तीन ही होता है, और कौन सा हो सकता है? क्या हो सकता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में यूजुअली मिडल होता है, दे विल बी लेइंग एग्स। कुछ अंडे एक्चुअली जो पहला हैच होता है ना, वही खुद गिरा के मार देता है। कुछ उड़ना सीखते सीखते मर जाते हैं, बड़ा होने के बाद इलेक्ट्रिक वायर में मिलके ज्वाइन होके मर जाते हैं। सो देयर मोर्टेलिटी रेट इज कांस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। सो यही तीन ही पॉसिबिलिटीज है, जिसके अलावा बाकी कोई कर्व नहीं। क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? या तो पहले मरो, या बाद में मरो, या बीच में मरो, कॉन्स्टेंटली मरो, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, ऑलराइट। अभी आप अगर क्वेश्चन पूछे तो आंसर कर सकते हो। सो यूजुअली द क्वेश्चन वाज लाइक दिस, डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, दे हैव वेरी गुड पेरेंटल केयर, ब्रीड सेवरल टाइम्स इन अ ईयर, they take the convex shape on the survivorship graph, and they produce large number of individuals. They take type 1 curve. Which of the following? Heteroporous, semal-porous, ऐसा ऑप्शन दे सकते। should know the terminology, इसका ऑर्गेनिजम्स का नाम क्या है। ओके, ऑलराइट। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, लास्ट टॉपिक इन पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। Okay. See, once the population reaches the carrying capacity, उनको stabilize होना पड़ेगा। They have to stabilize, or like they have to reduce in their, जो बहुत ज्यादा multiplication हो रहा है वो constant होने के लिए a lot of individuals need to die. Okay, so those factors which leads to population stabilization are dependent on two things. One is density dependent factors and density independent factors. Okay, so बहुत सारा बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन को कॉज करता है। दे विल मेक द पॉपुलेशन टू स्टेबलाइज एज सुन एज द पॉपुलेशन रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी। ओके, सो if you look into the factors, there are so many factors, both biotic and abiotic. उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं एज ए डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स एंड डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स। इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, लाइक दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2012 स्टेट एग्जामिनेशन प्रीलिम्स। सो एज कंपेयर्ड टू द स्टेट एग्जामिनेशन, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, एक अच्छा खासा डेप्थ नॉलेज है पॉपुलेशन इकोलॉजी में। So this, which of the following is not a density dependent factor of population stabilization? आंसर करो, हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन इफ यू वांट। गलत हो गए तो डोंट वरी, सही हुआ तो अच्छी बात है, गलत हुआ तो और अच्छी बात है। ओके, डोंट वरी अबाउट बीइंग रॉन्ग। हु सेज ए? ओके, बी, सी, डी। ओके, ठीक है। सो यू फेल्ड इट, मतलब आप जो चूज कर रहे हो, यू शुड हैव समथिंग इन माइंड जिसकी वजह से आपने चूज किया है। नाउ वी विल कम बैक टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कौन कौन सा फैक्टर है जो डेंसिटी डिपेंडेंट है और डेंसिटी इंडिपेंडेंट है। व्हाट इज डेंसिटी? वो अकॉर्डिंग टू द फिजिकल थिंग। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन per unit area, usually 1 square kilometer. Okay, per square kilometer, ऐसे 1 kilometer 1 and 1 square kilometer में कितने लोग रहते हैं? इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? 3
82, 376 ऐसा कुछ था, 382 हुआ। ओके, सो इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑन एन एवरेज इंडिया में 382 लोग रहता है, 382 पीपल लिव। ओके, सो यू नो व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दिल्ली? 11,000। ओके, 1 स्क्वायर किलोमीटर में दिल्ली में 11,000 लोग रहते हैं। मुंबई का पता है? गेस करो। दिल्ली में सबसे ज्यादा है। मुंबई का पॉपुलेशन डेंसिटी है 28,000। ओके, कुछ ऐसे भी जगह है जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी 2-3, पहाड़ों में किलोमीटर तक कोई नहीं रहता। ओके, हाँ 2-3-5 लोग सिर्फ 1 किलोमीटर में, इसीलिए एवरेज इंडिया का 382 है। ओके, इन स्पाइट ऑफ सिटीज लाइक दिल्ली एंड मुंबई। दिल्ली में अगर नहीं मानते हो तो एक बार मेट्रो में ट्रैवल कर लो। ओके, जाके बस दरवाजे के सामने खड़ा हो जाओ, वही खुद अंदर लेके जाएंगे, वही खुद बाहर लेके जाएंगे, आपको जाने आने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दे विल टेक यू इनसाइड, दे विल टेक यू आउटसाइड। हाँ, सो दैट इज द थिंग। ओके, डेंसिटी समझ में आ गया। नाउ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। देखो बहुत सारा एक लिस्ट है, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, पर उस लिस्ट को मगअप करने से अच्छा है कि कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या है। अभी हम लोग विल टेक एग्जांपल ऑफ लायन। सोचो ये एक सिचुएशन है जिसमें एक पूरा 10 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल में 2 ही लायन है, और दूसरा 10 स्क्वायर किलोमीटर में 200 लायंस है। कौन सा सबसे ज्यादा डेंस है? 200, और इसमें डेंसिटी कम है। ओके, 2 सिचुएशन हो गए। अब एक फैक्टर ले लेते हैं, विल टेक 1 फैक्टर, से फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट में आग लग गया। क्या ये 2 लायंस मरेंगे? पूरा आग लग गया, पूरा जल गया फॉरेस्ट 10 स्क्वायर किलोमीटर, तो 2 लायन है जो मरेंगे? बिल्कुल मरेंगे। पूरे जंगल जल गए तो क्या ही बचेगा? ओके, आग लग गए तो 2 लायन मरेंगे, और 200 भी मरेंगे। सो इज फॉरेस्ट फायर डेंसिटी डिपेंडेंट और डेंसिटी इंडिपेंडेंट? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। 2 लायन है तो भी मरेंगे, 200 है तो भी मरेंगे। ओके, ऐसा कोई ड्रॉट हो गया, 5 साल तक पानी नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है पूरे जंगल में, 2 लायन है तो ही मरेंगे, 200 है तो ही मरेंगे। ओके, सो दीज फैक्टर्स लाइक फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट, ओके, एंड पोल्यूशन, ऐसे दीज फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है। कम डेंस है तो ही लाइक इट विल स्टेबलाइज द पॉपुलेशन, मोर डेंस है तो ही करेंगे। बट देर आर सम फैक्टर्स। अभी कंपटीशन इज अ फैक्टर जो डेंसिटी में और लेस डेंस में अलग अलग होता है या सेम होता है? अलग होता है। जब ज्यादा डेंसिटी है तो कंपटीशन ज्यादा है, कम डेंस है तो कम है। ओके, सो डेंसिटी के बाद लाइक विल टेक सम मोर एग्जांपल्स, जैसे कि प्रिडेशन। ओके, प्रिडेशन जो है लाइक हंटिंग, सो वो कम डेंस में और ज्यादा डेंस में डिफरेंस होता है कि सेम होता है? डिफरेंस होता है। सो दीज आर द डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स। पैरासिटिज्म, ओके, प्रिडेशन, डिसीजेस 2 लाइन्स में ज्यादा स्प्रेड होता है या 200 लाइन में स्प्रेड ज्यादा होता है? सो डिसीज इज अ डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर। ओके, सो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा गया तो सी इफ दिस फैक्टर्स में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डेंसिटी है या डेंस नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो जब कम डेंस है तो अलग होगा और ज्यादा डेंस है तो अलग? ओके, वेदर ऐसे कोई बहुत ठंड हो गया, लो एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड, ओके, एक्सट्रीम रेनफॉल, ऐसा हुआ तो चाहे वो कम डेंस हो ज्यादा डेंस हो फर्क नहीं पड़ता। इट विल स्टेबलाइज और इट विल किल ऑल द इंडिविजुअल्स। पर कुछ फैक्टर्स है जो डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी है, दीज आर द डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स। इसलिए इंस्टेड ऑफ मगिंग अप द थिंग्स,
अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो यू कैन इजीली आंसर इट. ओके, सो राइट डाउन दिस. Okay. Now density is the concentration of individuals. Density is a concentration of individuals within a species in a specific geographical location. Okay. Stop. In nature, the population size and growth the population size and growth are limited by many factors. Some are density dependent, some are density dependent, and some are density independent. Okay, density independent. So पहले सबसे पहले density dependent लिखो. Density dependent factors. Density dependent factors. Okay. They occur when population growth rate are regulated or controlled. जो population growth हो रहा है उसको control कर रहा है ना, those factors. Okay. Population growth rates are regulated by density of a population. Okay. Stop. Most density dependent factors are biological in nature. Like, so write down some of the factors like predation, competition, accumulation of waste, pollution, disease, okay, disease, etc. Usually denser the population, क्या होगा? mortality rate is higher. Okay. जितना ज्यादा डेंस है उतना ज्यादा mortality होगा, जितना कम डेंस है उतना कम mortality होगा. Okay, so they are dependent on density. Usually denser the population, greater is mortality rate. Okay. Second, density independent factors.
Okay. These factors are usually abiotic in nature, Stop. They influence the mortality of a population. Irrespective of their density. They include weather, natural disasters, forest fire, natural disasters, forest fires, flood, drought, etc. Okay, so this is the thing. So जब क्वेश्चन पूछा तो एक एक करके आप सोचो कि क्या ये फैक्टर बहुत ज्यादा डेंस है और बहुत कम डेंस है तो इन्फ्लुएंस करेगा अलग अलग, या कम ज्यादा दोनों में एक ही तरह इन्फ्लुएंस करेगा. जस्ट चेक विथ दीज ऑप्शंस. अगर याद रखना है तो देयर इज वन निमोनिक लाइक पांडा पाव, पांडा का जो पाव है उसको यूज रखना. पांडा इज PANDA, predators, availability of resource, nutrients, disease, accumulation of waste. Then POW में PAW, these are density independent phenomena like natural disasters, abiotic factors, weather conditions. ऐसा. So if you want to remember, पर ये इसको याद रखने में ज्यादा मेहनत लगता है. I don't want you to mug up anything. Concept समझ लो, answer will come in the examination. Okay, don't bother because it is not like you have to remember something and write. प्रीलिम्स में ऐसा है कि आंसर आपके सामने रहता है. यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग जो मगअप करके जाने के लिए. सामने आंसर रहता है, उसको चूज करना है. Huh? It's not a disaster. Earthquake is not. Earth
earthquake is not a disaster. Okay, तीनों का अगर सुनामी इज नॉट ए डिजास्टर, ओके, हाँ वो भी नहीं है, हाँ. So that's why in order to understand this statement that there is no natural disasters, okay, अगर इस statement को validation करना है तो you have to understand the difference between disaster, crisis and hazard. Okay, if anybody wants to try once, बैठ जाओ. अरे इसको सुन के तो जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ. ये आंसर बहुत ज्यादा कर रहे थे. आई वांट टू डोंट वांट टू लीव यू कंफ्यूज्ड. रात को सोएगा नहीं तुम ट्रेन में. सी देखो, हजार्ड इज अ नेचुरल फिनोमिना. जो भी अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी वगैरह जो भी होते हैं ना, दिस फिनोमिना और फिजिकल प्रोसेस विच हैपेंस इज कॉल्ड एज हजार्ड. ओके, उसको हजार्ड बोलते हैं. अर्थक्वेक is a hazard, okay, so tsunami is a hazard, and these hazards may happen in an uninhabited area जहां कोई एक आदमी भी नहीं है, जैसे कि डेजर्ट है जहां पे एक कुत्ता भी नहीं रहता. okay, वहां अर्थक्वेक हुआ तो we don't mind, not even a single person is dead, not a single organism is dead, no loss to property or life. okay, so desert can happen in a uninhabited area or desert can happen in a हाईली पॉपुलेटेड एरिया. जैसे कि सिटी है दिल्ली में, अगर अर्थक्वेक हुआ तो दैट हजार्ड माइट क्रिएट ए कंडीशन कॉल्ड एज क्राइसिस. क्राइसिस क्या होता है? क्राइसिस इज अ कंडीशन in which the normal emergency measures which are available is not sufficient and it needs a extraordinary measures. जैसे कि अभी देखो फायर एक्सटिंग्विशर है, एम्बुलेंसेस है, हॉस्पिटल्स है, वो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, नॉर्मल कंडीशंस काफी नहीं होता है, इट नीड्स सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसेस. ओके, सो क्राइसिस इज अ कंडीशन अराइज्ड आउट ऑफ हजार्ड व्हिच हैज हैपेंड इन पॉपुलेटेड एरिया. अगर क्राइसिस कंडीशन में हम लोग उसको मैनेज कर दिए, टाइमली सप्लाई कर दिए, सबको मेडिकल फैसिलिटीज दे दिए, फूड दे दिए, रिलोकेट कर दिए, सो इफ यू आर एबल टू सेव मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, देन क्राइसिस विल बिकम नॉर्मल. अगर हम लोग क्राइसिस को मैनेज नहीं कर पाए, देन इट विल डीजेनरेट इनटू डिजास्टर. डिजास्टर इज अ वर्स्ट सिचुएशन ऑफ क्राइसिस. सो हर एक डिजास्टर जो है, इट इज मैन मेड, इट इज अ फेलियर ऑफ द मैन टू मैनेज द क्राइसिस. ओके, इसीलिए बोलते हैं कि देयर इज एवरी डिजास्टर इज मैन मेड. अगर मैन प्रिपेयर्ड होता, इफ we are able to manage the disaster management strategy हमारा बहुत साई में है. we have preparedness, we have pre-disaster steps, during disaster and after disaster. अच्छा खासा preparation है, तो we will not let the crisis to degenerate into disasters. So that is why all these things, hazards, we should not let it convert into disaster. हम लोग crisis के stage में उसको manage करके normalize कर देंगे. Now, is it justified? Every disaster is man-made. It's a failure of the man to manage the crisis situation. Okay, अब जाओ. यही तो ना. Then what is the use of science? What is the use of satellites? What is the use of these technologies? हमारे पास seismograph है, seismometer है, हमारे पास predictions है. अगर होगा भी ना, मैनेज नहीं कर, देखो कुछ हजार्ड्स हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते. व्हाट वी कैन डू इज बी प्रिपेयर्ड. सुनामी हो गया तो तुरंत बी प्रिपेयर्ड टू शिफ्ट द पीपल, मेक सम स्ट्रक्चर्स विच आर नॉट अफेक्टेड बाय सुनामीज. उस फ्लड आएगा तो रिलोकेट करो, लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, उनको एम्प्लॉयमेंट दे दो, लैंड दे दो. दैट इज व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट. ओके, क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम्स. यस, दैट इज व्हाट इज अ डेफिनेटली इट्स अ बायोलॉजिकल डिजास्टर. जो लॉकडाउन हुआ था ना, द लॉकडाउन, अगर कोई भी ड्रास्टिक स्टेप नेशनल वाइड हम लोग देते हैं, तो इट शुड हैव सम बेस और सम पावर which is extracted from some act.
जो लॉकडाउन हुआ था, दैट वाज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टेप डिराइव्ड फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. हमारा लॉकडाउन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू ही लगाया गया था. इट वाज इन्वोकेशन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. सो कोविड-19 वाज अ बायोलॉजिकल डिजास्टर. इट वाज अ फेलियर ऑफ इंडिया. हमारा इंडिया ने पूरा देश में एवरी कंट्री वाज फेल्ड, क्योंकि हमें पता नहीं था, हमारे पास बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था. अगर हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन था, बेड्स था, रेमडेसिविर जो भी मेडिसिन था, वैक्सीन तैयार था, तो we would have stopped many deaths. डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर होने से बचा सकते थे. इट्स अ फेलियर ऑफ मैन टू प्रेडिक्ट. हमारे पास उतना मेडिकल फैसिलिटीज नहीं था. अब जाके हम लोग हॉस्पिटल्स बनाने लग गए थे, फैक्ट्रीज में बेड लगाने लग गए थे, ऑक्सीजन के लिए दूसरा कंट्री से भीख मांग रहे थे, है कि नहीं? इट वॉज फेलियर. दैट्स व्हाई इट बिकेम ए डिजास्टर. ओके, एग्री? चलो, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो क्यों आया पता नहीं. चलो, you all got this, got the examples? Yeah. So that is about, ये क्यों आया? क्योंकि माइक ऑफ था इसलिए. All right. So that's about the density dependent and independent factors. ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है. लिस्ट को रट्टा मारने का जरूरत नहीं है. Just understand the concepts and answer the question. That's about population ecology. खत्म. Okay. So next is community ecology. What is a community? It's a group of populations. Population क्या है? Group of individual belonging to same species. अब सेम स्पीशीज का अलग अलग ग्रुप्स को साथ में लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी. कम्युनिटी इज अ कलेक्शन ऑफ different species, and these species should be living in the same area and interacting with each other. Okay, so next heading is community ecology. Okay, community ecology. See, ecological community is an assembly of species populations that has potential to interact. So those different species which live in a same area and which interact with each other is called as a community. देखो, इधर लायन कम्युनिटी है, जीब्रा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हीना है, जिराफ है, दिस टर्माइट्स, ट्री, बर्ड्स, एलिफेंट्स, लाइक ऑल दीज बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज, पर वो एक कम्युनिटी में रहता है. ओके, सो हम लोग जब इंसान भी रहते हैं ना, हम लोग वी कॉल कम्युनिटी अपार्टमेंट. क्यों कम्युनिटी अपार्टमेंट बोलते हैं? डिफरेंट स्पीशीज रहते हैं उधर. हम लोग ह्यूमंस तो रहते हैं, कुत्ते रहते हैं, बिल्ली रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चिपकली, रैट्स. हाँ, सो दीज आर डिफरेंट स्पीशीज, वी ऑल इंटरैक्ट. ओके, वो इंटरैक्शन या तो फ्रेंडली हो सकता है या दुश्मनी हो सकता है. ओके, या एक दूसरे से न्यूट्रिशन लेना या एक दूसरे को मारना, कुछ भी हो सकता है. देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स. सो इफ दे आर इंटरैक्टिंग, two different species are interacting, they will create so many kind of relations. Okay, so this community is a assembly of populations which have potential to interact. Definition क्या है? Interactive assemblage of species occurring together within a particular geographical area. एक ही geographical area में होना चाहिए. एक population यहाँ, दूसरा population कहीं और, we cannot call it as a community. एक ही area में होना चाहिए. So, and a set of species whose ecological function and dynamics are some way interdependent. एक दूसरे के ऊपर depend होना चाहिए. Okay, some kind of interaction should be there. So that is what is called as a community, ecological community. Okay. So write down this. Ecological community is a assemblage of species population. Ecological community is a assemblage of species population
that has potential to interact. So it is the assemblage of species population. That is an assemblage of species population that has potential of interaction. That has potential of interaction. Okay. So definition. Stop. It is an interactive assemblage of species. It is an interactive assemblage of species it's an interactive assemblage of species. Satyendra Kumar Manji, don't write it. Sir, Hindi language use कीजिए. हाँ ना, चलो ट्राई करते हैं. एक साउथ इंडियन को लेके आके खड़ा करके हिंदी बोलने के लिए बोल रहे हैं आप. अच्छा, चलो. It's an interactive assemblage of species occurring together within a particular geographical area. Assemblage of species, assembly of different species, assemblage of species occurring together within a particular geographical area, comma, a set of species whose ecological function and dynamics are some way interdependent. एक दूसरे ऊपर डिपेंड होता रहता है. एक स्पीशीज दूसरा स्पीशीज के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं. ओके, नाउ we'll try to answer some of the questions. So इसका आंसर करो. A relationship between two species where one benefits while the other is harmed. मतलब दो ऐसा स्पीशीज इंटरेक्ट कर रहे हैं जिसमें एक स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है, एडवांटेज हो रहा है, एंड दूसरा स्पीशीज हार्म हो रहा है. ओके, सो सेज ए म्यूचुअलिज्म, बी कमेंसालिज्म, सी पैरासिटिज्म, डी. चलो, ओके. A frog eats a grasshopper. The frog and grasshopper are demonstrating. Who says A? B? C? Okay. D? Parasitism. So let's see again. Relationship between two organisms in which one organism's benefit and other is unharmed. Okay. One is getting benefit, another is unharmed. So who says A? B? A answer नहीं है. B? C? D? Okay. So tapeworm and cat. Who says A? B? Okay. C? D? So it is very important to know the terminology. इसका मतलब क्या है? With examples. Questions ऐसे ही पूछा जाता है. Okay. So there was one question in 2022. चलो वो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, एक बार पूरा एक्सप्लेन करने दो. 2022 में which of the following exhibits the symbiotic relationship? उसमें तीन ऑप्शन था. Cnidarians, termites
फंगस। ओके, वो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको, आई विल शो यू दैट क्वेश्चन, 2022 प्रीलिम्स का था। 3 ऑर्गेनिज्म दिए थे, निडेरियंस। ओके, सो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू कि अलग अलग शब्द यूज करके। ओके, पर यूपीएससी में यही वर्ड था, और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वर्ड नहीं है, क्योंकि हम लोग जब जनरल बायोलॉजी पढ़ेंगे ना, विच इज अ मस्ट रीड, है ना, एटलीस्ट बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो पढ़ना ही पड़ेगा। सो जब जनरल बायोलॉजी पढ़ेंगे वहां, yesterday we were discussing about plant phylums, ऐसे किंगडम एनिमेलिया में भी बहुत सारा फाइलम्स है। ओके, सो फाइलम स्पॉन्जेस, फाइलम निडेरिया, फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ओके, सो मोलस्का में जब पढ़ेंगे देन यू स्टडी दैट ऑयस्टर इज अ फिल्टर फीडर, वो क्वेश्चन वहां से लिया गया है। और फाइलम निडेरिया पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कोरल पॉलिप है ना, कोरल रीफ, कोरल्स, दैट इज निडेरिया। 2 ही ऑर्गेनिज्म है निडेरिया में, एक जेलीफिश है, एक कोरल पॉलिप है। जब आपको पता चलेगा कि निडेरियंस का मतलब है कि कोरल पॉलिप, तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वो सिम्बायोटिक है कि नहीं। ये दोनों का नॉलेज का जरूरत है, और दोनों बेसिक है, ऐसा बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल कवरेज ऑफ सिलेबस, दैट्स इट। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे, फॉर दैट इट वाज अ केक वॉक। ओके, बोला कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, निडेरियम पता है कि वो कोरल है। हम लोग यहाँ जब इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो समझ में आएगी कि कौन सा सिम्बायोटिक है, कौन सा पैरासिटिज्म है, और क्या है। ओके, सो दैट वाज अ क्वेश्चन। मैं इसके बाद में दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी आर स्टडीइंग इन community ecology is interspecific interactions. Okay, write down this heading. Interspecific interactions. Okay, see, interspecific interaction means inter, एक दूसरे के। Okay, specific is 2 different species. See, when 2 different species interact with each other, what will happen? So let us take one species as species A. Okay, yes, species A, and another species is species B. Okay, और इसमें अगर प्लस है तो इट इज बेनिफिट, इसको एडवांटेज हो रहा है, माइनस है तो इट इज हार्म। ओके, एंड 0 है तो इट इज न्यूट्रल, नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट, बेनिफिट भी नहीं है, हार्म भी नहीं। ओके, दिस व्हाट 0 मीन्स। लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। When 2 species interact with each other, if both the species are benefited, एक दूसरे के लिए दोनों बेनिफिट हो रहा, that kind of interaction is called as mutualism, okay, or also called as symbiosis. Yeah. Example: coral polyps and zooxanthellae. Okay, so क्रो और कैटल क्या है, मतलब क्रो क्या करता है कैटल को? अच्छा, वो करता है, कचरा निकलता है, या इसके ऊपर बैठ के उसका टिक्स निकलता है। टिक्स इंसेक्ट्स जो होता है ना गाय के शरीर में, उसको निकलता है। ओके, सो उसके लिए ए है। सी देखो, इसमें 2 तरह है। ओके, वन इज म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस, एक होता है प्रोटो कोऑपरेशन। इसका भी सिंबल प्लस है। ओके, दोनों में डिफरेंस है। म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस और प्रोटो कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस है? ओके, म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस ऐसा है कि जो लैला मजनू, रोमियो जूलियट एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ओके,
सो इट्स ट्रू लव। एक ऑर्गेनिज्म नहीं है नेचर में तो वो दूसरा नहीं रह सकते। जैसे कि कोरल पॉलिप और ज़ूज़ैंथिले, कोरल पॉलिप के बिना ज़ूज़ैंथिले अकेले जिंदा नहीं रह सकता, और ज़ूज़ैंथिले के बिना कोरल पॉलिप जिंदा नहीं रह सकता। दैट इज म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस। पर प्रोटो कॉपरेशन ऐसा है कि अगर दोनों को इंटरेक्शन हुआ तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है, अगर इंटरेक्शन नहीं भी हो रहा है ना तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, सो अलग अलग जी लेंगे। हाँ हाँ हाँ, जो यूपीएससी तैयारी में होता है। सो अगर सिलेक्शन हो गया तो बाद में फोन नहीं उठाएंगे, सो बी केयरफुल। ओके, सो सिलेक्शन तक ऐसा ड्रास्टिक डिसीजन मत लो कोई भी। ओके फाइन, सो दिस इज प्रोटो कॉपरेशन। सो पहले सिम्बायोसिस का करो। आप जो बोले ना क्राउ एंड बफेलो, वो एग्जांपल है प्रोटो कॉपरेशन। ओके, ऐसा नहीं कि क्राउ में इंसेक्ट नहीं मिलेगा तो कौवा मर जाएगा। ओके, काऊ के ऊपर अगर नहीं बैठा तो दूसरा कुछ खा लेंगे। अगर ये क्राउ आके उसके ऊपर इंसेक्ट नहीं निकला तो कैटल मर नहीं जाएंगे। ओके, दे कैन लिव बट इट विल हेल्प। नाउ टेल मी सम एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस। लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है उनको नाइट्रोजन सिर्फ उनके रूट्स में जो बैक्टीरिया होता है उनसे मिलता है। दे विल फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड प्रोवाइड द नाइट्रोजन टू द प्लांट्स, नहीं तो वो नाइट्रोजन नहीं ले सकते। और बिना प्लांट के बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको प्लांट का नोड्यूल्स चाहिए जीने के लिए। दिस एग्जांपल। देन व्हाट अबाउट हनी बी एंड फ्लावर? दोनों से प्लस हो रहा है ना, हनी बी को नेक्टर मिल रहा है, फ्लावर को पॉलिनेशन हो रहा है। ओके, हैव यू हर्ड ऑफ दिस प्लोवर बर्ड? प्लोवर सुना आपने? लेट मी सी इफ आई कैन शो यू दिस। इंटरनेट चलता है यहाँ पे? There should be somewhere Chrome, right? ये कभी देखा है ये सीन? सो जनरली जब ये नहीं, ये अलग है पर ये एक्चुअली नेचर में बहुत देखने को मिलता है। सो आफ्टर अ नाइस मील जो क्रोकोडाइल है वो आके रिवर बैंक में अपना मुंह खोल के बैठ जाता है, और ये जो बर्ड है ना इट्स कॉल्ड प्लोवर बर्ड। ये उस मुंह में जाके जो टीथ के बीच में जो मीट पीसेस रहता है उसको खा लेता है। ओके, सो बर्ड को फूड मिल रहा है और क्रोकोडाइल को डेंटल फ्लॉस मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो दोनों दैट इज अ थिंग। ओके, सो रेमोरा बोलते हैं ना, रेमोरा फिश, वही शार्क एंड रेमोरा। सो दोनों नहीं, वो दैट्स नॉट एन एग्जांपल ऑफ दिस। इसको इससे रेमोरा फिश को क्या मिल रहा है? वही तो ना, एक बेनिफिट हो रहा है। शार्क को क्या मिल रहा है? देखो दोनों स्पीशीज को यूजफुल होना चाहिए। शार्क और रेमोरा में ये भी दिखाता हूं। ठीक, सीख। जब शार्क जाता है तो उसके साथ साथ कुछ फिशेस भी चिपक के जाते हैं। दे आर कॉल्ड सकर फिश। सो दे डोंट टेक एनीथिंग, उससे शार्क को लेना देना है। तुम रहो नहीं रहो वो अपने आप हंट कर रहे, खा रहे, और खाने के बाद जो बचा है
वो इसको ले रहा है, ये ले या ना ले उसको कोई लेना देना नहीं. दैट इज अनदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप. इसका भी एग्जांपल देंगे, बट नॉट म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कॉपरेशन. इसमें शार्क को जो मिल रहा है वो 0 है. जो रेमोरा फिश है इसके लिए इट इज गेटिंग प्लस. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कमेंसालिज्म. ओके, प्लस 0 जो है वो है. ओके, सो दैट इज सिम्बायोसिस. ठीक है, ये जो प्लोवर बर्ड और क्रोकोडाइल है, दिस इज ऑल्सो प्रोटो कॉपरेशन, राइट. और कुछ एग्जांपल्स? सी एनिमोन एंड क्लोन फिश. ओके, वो दोनों म्यूचुअलिज्म है. लाइकन्स, लाइकन्स सुना आपने? व्हाट इज लाइकन? हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट हर्ड अबाउट लाइकन? LICHEN. ओके, सो अभी तक यूपीएससी में 4 बार ये टर्मिनोलॉजी यूज किया गया, लाइकन. ओके, एक बार तो ऐसा ही डायरेक्ट क्वेश्चन था. द लाइकन्स which are responsible for initiation of succession are combination of algae, fungus, bacteria, fungus and protozoa. Okay, bacteria and algae. Okay, it is algae and fungus. Algae and fungus का जो mixture है, that is called as lichen. Okay, so lichen is a symbiotic. Bacteria के इस fungus के बिना algae जिंदा नहीं रह सकता, because it is one which prepares the food, and algae के बिना fungus भी जिंदा नहीं रह सकता. Okay, they provide mutual benefit to each other. So that's the thing, right? Then termites and protozoa. जो termites होता है, जो white ant बोलते हैं, जो जितने भी cellular material है उसको खा लेता है. So these termites eat cellulose. अगर उसके पेट में अगर parasites नहीं ना, protozoa नहीं ना, तो वो digest नहीं हो पाएगा. So they cannot digest the cellulose. So termites and protozoa is symbiotic relationship. अगर प्रोटोजोआ टर्माइट्स के पेट में नहीं है तो टर्माइट्स जिंदा नहीं रह पाएंगे. अगर टर्माइट्स में जगह नहीं मिले तो प्रोटोजोआ कैन नॉट सर्वाइव. ओके, सो दिस इज आल्सो थिंग. सो राइट डाउन द फर्स्ट थिंग. सो फर्स्ट वन इज म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस. म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस. So it is an interaction in which the species can no longer live without each other as they are totally dependent on each other, to survive. Okay, it's an interaction in which the species can no longer live without each other as they are totally dependent on each other for survival. Okay. Example: coral reef, coral polyp and zooxanthellae. Okay, coral polyp and zooxanthellae. Zooxanthellae is blue-green algae. Okay, coral polyp is a Cnidarian. Okay, phylum Cnidaria. Then second example, lichens, algae plus fungus. Lichen, algae plus fungus. ये डायरेक्ट क्वेश्चन था यूपीएससी 2015 या 16 में. Okay, we'll see that again. Then termites and protozoa.
termites and protozoa. Then leguminous plants plus nitrogen fixing bacteria. Nitrogen fixing bacteria. So that's the thing. Symbol is plus plus. दोनों को benefit हो रहा है. Okay. Plus plus. Then write down proto cooperation. Okay. Another same symbol. It's called proto cooperation. Proto cooperation. It is an interaction in which both populations are benefited. Both populations are benefited by each other. Both populations are benefited by each other. But their relations are not obligatory. They are not obligatory. ठीक है, जरूरी नहीं है. अगर देखो फ्लावर्स एंड हनी बीज, अगर एक स्पीशीज ऑफ प्लांट्स फ्लावर्स से अगर हनी बी को नहीं मिला तो हनी बी मर नहीं जाएगा, दूसरा स्पीशीज के पास जाएगा. अगर हनी बीज पॉलिनेट नहीं करेंगे तो बटरफ्लाइज करेंगे. ऐसा बहुत सारे इंसेक्ट्स है जो हनी बीज का रोल प्ले करते हैं. सो इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी. ऐसा नहीं कि एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते. ठीक है. सो है ना, मैं नहीं तो कौन भाई, तू नहीं तो कोई और, ऐसा. बट ह्यूमंस में अप्लाई नहीं करता बिकॉज वी ऑल बिलोंग टू सेम स्पीशीज. ये अलग दूसरा स्पीशीज होना चाहिए. ओके. सो राइट डाउन क्रोकोडाइल एंड प्लोवर बर्ड. Crocodile and plover bird. Okay. प्लोवर बर्ड जो होता है ना, जो बर्ड जो मुंह में जाके बैठा था अक्षय कुमार. सो इट्स मोस्ट, अगर वो मुंह बंद कर दिया तो वो अलग हो जाएगा. दैट इज प्लस एंड माइनस. प्लोवर बर्ड को माइनस हो जाएगा और क्रोकोडाइल को प्लस हो जाएगा. तो बर्ड को पता है कि ये मुंह बंद नहीं करेगा, इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये खाना खाने के बाद ही मुंह खोल के बैठा है, क्योंकि अब खाएगा नहीं है. ओके. देन क्रोकोडाइल, प्लोवर बर्ड. देन क्राउ एंड कैटल. क्राउ, ह्यूमंस एंड कैटल. ह्यूमंस के बिना कैटल, देखो दोनों से म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है. ह्यूमंस आर गेटिंग मिल्क, कैटल्स आर गेटिंग केयर. पर ऐसा नहीं कि मिल्क के बिना ह्यूमंस जिंदा नहीं रह सकते, अलग अलग भी रह सकते हैं. दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री. प्रोटो कॉर्पोरेशन में आता है. ओके. सो अगर ऐसा कुछ है तो गाय के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता और इंसान के बिना गाय जिंदा नहीं रह सकता. देन इट वुड कम अंडर mutualism or symbiosis. Okay, so that's what is the thing. Second example, second वो हो गया. Okay, that's called mutualism or symbiosis and proto cooperation. Next is competition. Okay, so next kind of interaction is competition. So competition में क्या है, when two species interact with each other, both of them are negatively impacted. दोनों को नेगेटिव इंपैक्ट होगा, किसी को भी पॉजिटिव नहीं हो. दैट्स कॉल्ड competition. एग्जांपल्स बताओ. हाइना एंड लायंस. इसमें हाइना को तो नेगेटिव होता है, लायंस को भी होता है.
ग्रुप्स में लायंस को भी मार देता है, पर इंडिविजुअल लायन और इंडिविजुअल हीना अगर देखें, या अगर उसको भी ग्रुप ले रहे तो इसको भी ग्रुप लेंगे ना. ग्रुप ऑफ लायंस, टाइगर एंड लायन, वेरी गुड. टाइगर एंड लायन कैन बी एग्जांपल. मंगूस एंड गूस, स्नेक. हाँ, स्नेक एंड मैन, वो कुछ भी हो सकता है. मैन यूजुअली मार दिया स्नेक को, ऐसा नहीं होता है. आपने नागिन मूवी नहीं देखा है? वो नहीं होता है ना. आप फाइट इंडिविजुअल सेम स्पीशीज नहीं हो सकता, अलग अलग स्पीशीज होना चाहिए. अगर आप में कंपटीशन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, बट इट कैन नॉट बी गिवन एग्जांपल बिकॉज यू ऑल बिलोंग टू सेम स्पीशीज. ओके, सो यूजुअली देयर विल बी कंपटीशन फॉर स्पेस, ओके, एंड रिसोर्सेस. एक ही जगह पे इफ अ डियर एंड जीब्रा आर ग्रेजिंग, तो वो कंपटीशन है. अगर जीब्रा ज्यादा खा लिया तो उनको, डियर को ग्रासेस कम पड़ेगा, डियर खा लिया तो जीब्रा को कम पड़ेगा. दे विल बी कॉम्पिटिंग फॉर रिसोर्सेस. लायन एंड टाइगर कॉम्पिटिंग फॉर स्पेस. मंगूस एंड स्नेक, जब व्हेन दे फाइट बोथ ऑफ देम गेट अफेक्टेड. ऐसा नहीं कि कोई एक सुपीरियर है, दोनों को इक्वल स्ट्रेंथ है. यूजुअली competition happens when two species are equal capable. Okay, so that is called competition. Write down this second one. Competition, it is a kind of interaction, it's a kind of interaction between two species, kind of interactions between two species in which both are harmed to some extent. In which both are harmed to some extent. Both are harmed to some extent. दोनों को थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है. एग्जाम्पल, टाइगर एंड लायन, राइनो एंड एलिफेंट, ओके, स्नेक एंड मंगूस. और क्या बोल सकते हैं? अच्छा, यूजुअली आपने स्पॉन्जेस सुना है? स्पॉन्ज एक तरह का एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है. सो यूजुअली दे आर ग्रोन ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, जो फ्लोर होता है ना, उस पे ग्रो करते हैं. दे ऑलवेज कॉम्पीट विथ कोरल रीफ्स, क्योंकि दोनों को कुछ सबस्ट्रेट चाहिए ग्रो करने के लिए. दोनों ग्राउंड के ऊपर ग्रो करते हैं, एंड बोथ ऑफ देम कॉम्पीट फॉर स्पेस. एक्वेटिक इकोसिस्टम में, यूजुअली ओशियंस में, wherever coral reefs are found, they are always in competition with sponges. Okay, so you can write example of sponges and coral reefs. Zebra and deer, bear and wolves, okay. So ये दोनों they'll fight for resources. Wolves and bear both are equally strength. So सिर्फ मोगली में वो दोनों दोस्त बन सकता है, बाकी नेचुरली दे आर. मोगली कौन सा? जंगल बुक, उसमें भालू और जो वुल्व्स है वो दोस्त है. बाकी नेचर में दे विल ऑलवेज फाइट विथ ईच अदर. So that is competition. Okay. Next one is predation. देखो, predation में भी there is plus and minus. Parasitism में भी there is plus and minus. That means when two species interact with each other, एक को benefit हो रहा है and दूसरों को harm हो रहा है. दोनों में what is the difference between parasitism and predation? पैरासाइट में जान नहीं लेता. आप ये देखिए हो, कैन यू हैव यू सीन दिस, जो वो ब्लड सकिंग लीच, क्या बोलते हैं उसको, लीच. 10-15 छोड़ दो, फिर देख लो कि वो इंसान बचता है कि नहीं. ओके,
व्हाट आर द डिफरेंसेस? पैरासिटिज्म में और प्रेडेशन में क्या डिफरेंस है? दोनों में एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को हार्म हो रहा है. हाँ, देखो, देर आर टू मेजर डिफरेंसेस. प्रिडेशन में देर आर टू ऑर्गेनिजम्स. एक जो बेनिफिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेडेटर, एंड जो हार्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रे. प्रेडेटर और प्रे. So predator will always be larger animal and prey will always be smaller animal. First difference. Okay. Second difference is there will be instant kill, sudden kill. It's a food and dinner principle. Okay, आज खाना है तो मार के खा लो and खत्म. They won't be doing it. Parasitism में there are two organisms. One is called as host and another is called as पैरासाइट. सो इसमें प्रेडेटर को प्लस मिल रहा है और प्रे को माइनस, या होस्ट को माइनस मिल रहा है और पैरासाइट को प्लस मिल रहा है. सो हियर द ऑर्गेनिज्म विच इज अ सोर्स ऑफ फूड इज ऑलवेज लार्जर एनिमल, जिसको होस्ट बोलते हैं. अ लार्जर एनिमल इज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म. पैरासाइट हमेशा छोटा रहता है, विच विल फीड ऑन द लार्जर ऑर्गेनिजम्स. ओके, फर्स्ट. सेकेंड थिंग, देर वॉन्ट बी इंस्टेंट किल. इंस्टेंटली वो मरेगा नहीं, मरेगा जरूर अगर कंटिन्यूसली हम लोग कुछ दिए नहीं दिए, एंड इट कीप ऑन सकिंग द और एक्सट्रैक्टिंग द न्यूट्रिशन. सो देयर विल बी डेथ एट द फाइनल टाइम, पर तब तक यू नो इट विल सर्वाइव, राइट. इसका पैरासिट प्रेडेशन का एग्जांपल बताओ. टाइगर एंड डियर, और birds, eagle and snake. Instantly they'll be killing. Okay. Parasite का example, humans and mosquito. Okay. Humans and वो जो क्या होता है, ticks, lice. Okay. Humans and lice. Leech, humans and leech. Okay. Husband and wife. चलो, I didn't say who is parasite and who is host. बाद में आप डिसाइड कर लेना. Okay. हाँ, चलो, write down this. Okay. First is predation. Predation. Okay. It is an interaction in which a predator captures, kills and eats. Predator captures, kills and eats an animal of another species. An animal of another species called as prey, P-R-E-Y. Parasitism. It's a practical example of, okay, they slowly take our resources. हमारा पूरा ग्रेन्स खा लेता है, और अगर आप छोड़ दिए ना, they will entirely cause famine. हाँ, नहीं, ये तो लाइव एग्जाम्पल है. यू नो, ह्यूमंस एंड रैट्स लिख लो. ओके. मैं जो डिक्टेट कर रहा हूँ वो इंस्टेंटली आ रहा है. मैं क्या बोला मैं दोबारा नहीं बता सकता. कोई तो बता दो. अरे नहीं भैया, वो which is called prey. Okay. So, which is called prey, right? The predator is naturally benefited. Predator is naturally benefited from the relationship. Naturally benefited from the relationship, while prey is harmed. While prey is harmed.
HARMED. Example, tiger and deer. Tiger and deer, or cat and rat. ओके, पर कैट इंस्टेंटली नहीं मारता, वो खेलता है पहले, पर टॉम एंड जेरी में तो मारता ही नहीं है. ओके, सो डोंट राइट, पर या यू कैन राइट रैट एंड कैट. ओके, सो नेक्स्ट पैरासिटिज्म. इसमें सिंबल क्या है? प्लस एंड माइनस. ओके, पैरासिटिज्म, इट इज एन इंटरेक्शन. It's an interaction in which one species is harmed. Parasitism. It's an interaction in which one species is harmed and other is benefited. Is benefited. Stop. It involves a parasite. It involves a parasite which is a small sized organism. Which is a small sized organism living in or on, कभी कभार अंदर भी रहते हैं. So usually, like you know, हमारा पेट के अंदर, like sometimes you'll get tapeworms, राउंड वर्म्स, जो फूड पॉइजनिंग की वजह से जो बाहर मिलता है ना समोसा, जो बहुत टेस्टी रहता है, यू डोंट नो लाइक हाउ मच ऑफ इन्फेक्शन इट इज कैरिंग. कभी कभार कुछ वर्म्स अंदर चला जाता है एंड यू विल गेट स्टमक एक. दैट इज बिकॉज ऑफ दीज वर्म्स. ओके, सो इन और ऑन another living species called as host, which are larger in size. The parasites are benefited. And host is harmed. Okay. Example, humans and mosquitoes, tapeworm and humans or cats. Okay. Epiphytes and trees. आपने देखा होगा ट्रीज के ऊपर कुछ प्लांट्स ग्रो करेंगे. दे विल इंसर्ट देयर सो दे विल इंसर्ट देयर रूट्स इनटू द ट्रीज एंड वहां से न्यूट्रिशन स्लोली सक करते रहेंगे. ओके, क्लाइंबर्स नहीं, दैट आर डिफरेंट. एपिफाइट्स एक्चुअली insert their roots into the tissues of trees. सपोर्ट के लिए होता है, दोज आर डिफरेंट प्लांट्स. ओके, कुछ क्लाइंबर्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट को सपोर्ट के लिए लेते हैं, बट दे डोंट एक्सट्रैक्ट द न्यूट्रिशन. उनका रूट्स जो है वो जमीन पे रहता है, वो सिर्फ फिजिकल सपोर्ट के लिए एंटेंगल करते हैं, जैसे कि पेपर पर. बट सम प्लांट्स एक्चुअली ग्रो ऑन ट्रीज, यूजुअली अपर ब्रांच. उनका रूट्स प्लांट्स के अंदर होता है. दे आर पैरासाइट्स. सैंडलवुड क्या बोलते हैं हिंदी में? चंदन. ओके, जो पुष्प वाला नहीं, वो रक्त अलग है. दैट इज अ डिफरेंट चंदन, दैट्स कॉल्ड रेड सैंडर्स. चंदन और इसको क्या बोलते हैं? रक्त चंदन बोलते हैं. ओके, बट आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट इन हिंदी.
जो लाल कलर का लकड़ी होता है, सिर्फ आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। सो जो पुष्पा मूवी में है दैट इज रेड सैंडल्स। जो एक्चुअल सैंडलवुड है इट इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, जो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के मिलता है, एंड दे गिव वेरी नाइस फ्रैग्रेंस। श्रीगंध बोलते हैं उसको, लाइक यू नो सैंडलवुड, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पैरासाइट। वो रूट्स दूसरा प्लांट्स को जाके वहां से न्यूट्रिशन लेता है, दे डोंट टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। सो इसका जो सबसे ज्यादा स्मगलर था उनका नाम था वीरप्पन। ओके, जो वीरप्पन था ही वाज नोन एज सैंडलवुड स्मगलर। वो रियल लाइफ है, पुष्पा इज द रियल लाइफ, दोनों अलग अलग है, नो इट इज नॉट इवन हिज स्टोरी। ओके, सो दैट इज पैरासिटिज्म, राइट। चलो, नेक्स्ट वन इज commensalism. Okay, commensalism. So it is a kind of interaction जहां दो species interact कर रहे हैं and one of the species is getting benefited, another is neither harmed nor benefited. दूसरा का कुछ लेना देना नहीं है. Okay, that is called as commensalism. Example, the example which you gave last time, shark and remora fish or sucking fish. Okay, so shark and remora fish. Okay, so ये जो चिपक के रहते हैं वो शार्क को पता भी नहीं चलेगा कि कुछ अपने ऊपर चिपका हुआ है. दे डोंट हैव एनीथिंग. शार्क को कुछ ना बेनिफिट है ना लॉस है. So it is just going on with its life. दूसरा एग्जाम्पल, what can you think of? सोचो. हाँ, ह्यूमन एंड, ह्यूमन एंड क्या? चिकन. अब जीरो किसको हो रहा है? चिकन को. जान गवा दे रहे हो, is losing its life. It is plus and minus its predation. Have you heard of this animal called as cow dung beetle? सुना आपने? So usually cow dung beetle, जो cow dung होता है ना, जो गोबर, उसको लेके यूजुअली उसके अंदर ही रहता है. उसको रोल करके वो अपना केव में लेके जाके इट विल फीड ऑन इट. सो cow dung beetle is getting benefited from the cow dung. Okay, and for cow it is, क्या फर्क पड़ता है? अपना गोबर कोई इंसान उठा ले, कीड़ा उठा ले, जो भी उठा ले, it doesn't matter. It is zero for cow. Okay, so एक तरह का birds होता है, decomposers and what? वही तो ना, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते. मर चुका तो दूसरा ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल कैसे से देंगे? इट शुड बी टू स्पीशीज इंटरैक्टिंग. जब तक वो मरेगा नहीं वो डिकम्पोजर्स कुछ नहीं कर पाएंगे. इसमें क्या है? हाँ, और ह्यूमंस को सिक्योरिटी मिल रहा है, डॉग को खाना मिल रहा है, वो है ना म्यूचुअलिज्म. प्लस प्लस है. सो देखो, देर इज वन मोर एग्जाम्पल. इट इज कॉल्ड एज कैट एंड एग्रेट. सो डोंट कंफ्यूज इट विथ काउ एंड क्राउ. ओके, एक इसको देखा आपने? सो जहां जहां कैटल ग्रेजिंग करते हैं तो यू कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ व्हाइट बर्ड्स सिटिंग हियर. सो ये लोग क्या कर रहे हैं? दे आर नॉट प्लकिंग एनी इंसेक्ट फ्रॉम द बॉडी. वो लोग जहां जहां ग्रेजिंग करते हैं उसके अगल बगल में रहते हैं. जैसे वो काऊ मूव करेगा ना अपना घास खाने के लिए, अंदर जो इंसेक्ट्स है वो बाहर आते हैं, उसको पकड़ के ये लोग खाते हैं. दे विल ईट द इंसेक्ट्स विच आर कमिंग आउट फ्रॉम द ग्रेजिंग. यहाँ ऐसे ग्रेज करते समय बहुत सारे इंसेक्ट्स जमीन से उठ के बाहर आए, उसको खाते हैं. सो दिस इज गेटिंग प्लस.
पर काऊ के लिए कुछ लेना देना है, तुम रहो नहीं रहो वो अपने आप ग्रेजिंग कर रहा है। ओके क्या गाली मत दो, गाली दी चलो जैकल, गोल्डन जैकल और टाइगर, आप देखे होंगे जंगल में जहां जहां टाइगर रहता है ना उसके पीछे पीछे जो फॉक्स, जैकल बोलते हैं, गोल्डन जैकल छोटा सा है, वो हमेशा उसके पीछे पीछे चलता है। तो यूजुअली इट विल नॉट हंट, उतना बड़ा नहीं कि हंट कर सकते। जो टाइगर खा के पेट भर के जो चला जाएगा ना, जो बचा हुआ, ये उसको जाके बचा हुआ चीज को खाता है, इसलिए वो हमेशा टाइगर के साथ ही रहता है पर टाइगर के नजर में नहीं आता। दैट्स व्हाई इट्स वेरी क्लेवर, बहुत ही शातिर होता है गोल्डन जैकल। यूजुअली जब स्टोरीज में जैकल को मंत्री बना देते हैं, ओके, बिकॉज इट्स वेरी क्लेवर। कोई हंट नहीं करेगा, टाइगर को हंट करने देंगे, हम पीछे से वेट करेंगे, जब वो खा के जाए तो बाकी जाके अपना पेट भर लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज द थिंग, ओके, गोल्डन एग्रेट, राइट। चलो राइट डाउन दिस commensalism. Commensalism. It's an interaction in which one population is benefited. One population is benefited, but the other is not affected. The other is not affected. Example, cattle, egret or cattle. Cattle, egret and cattle. अब क्राउ और कैटल को इसको डिफरेंस मत करो, वहां पे क्या हो रहा है, म्यूचुअल हो रहा है कौवे के साथ, बट इसमें ये लोग सिर्फ जो बेनिफिट हो रहा है, मतलब जो इंसेक्ट्स बाहर आ रहा है, दे आर फीडिंग ओनली ऑन दैट। Then golden jackal and tiger. Then remora fish and shark. Okay, remora fish and shark, etc. Okay. Next is amensalism. So amensalism is a reaction when two species interact. One species is negatively harmed and another is neither harmed nor benefited. Minus and zero. Okay. So this is the last kind of interaction. Example batao. Big trees and a small plant of different species growing. So that's a good example. Okay. A big tree plus a small plant, but they should be different species. इससे क्या हो रहा है, फॉर बिग ट्री इट इज जीरो, बगल में स्मॉल प्लांट है कि नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर बिकॉज ऑफ बिग ट्री द स्मॉल प्लांट इज गेटिंग इफेक्टेड, उनको पानी नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, शेड कर रहा है, सनलाइट पक्का नहीं मिल रहा है, सो इट इज गेटिंग हार्म. एनी अदर एग्जांपल? अच्छा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुना है आपने? हु इज ही? कभी बचपन में 5th 6th 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. इलेक्ट्रिसिटी नहीं, he is the person who discovered penicillin. पेंसिलिन सुना? पेंसिलियम. व्हाट इज पेंसिलिन? दवाई है. इट्स अ एंटीबायोटिक. यूजुअली इट इज गिवन व्हेन देयर इज टू मच ऑफ पेन और डिसीज. सो व्हाट इज दिस पेंसिलिन? पेंसिलिन क्या है? इट इज अ फंगस. Okay, penicillium is a fungus which is injected to the body
this fungus release some chemicals which are harmful to the bacteria which are causing us trouble. इसीलिए पेंसिलियम जो इंजेक्ट करता है, will inject a good fungus. This fungus will release chemicals to kill the bacteria which is causing us disease. So penicillium and bacteria is an example of commensalism. Okay, penicillium, which is a fungus, and bacteria inside our body. So these two will go commensalism. Okay. Some simple examples. अगर कोई elephant is walking on a path, उसके रास्ते में जितने भी plants आएंगे, all of them will die. For elephant it is 0, but all those plants it will die. So this is the commensalism. Okay. So write down this. It is a negative association between two species. It's a negative association between two species in which one species harms or restricts the other species without itself being adversely affected, or harmed by the presence of other species. So दूसरे स्पीशीज को एक हार्म कर रहा है, पर उसकी वजह से खुद को कोई हार्म नहीं हो रहा है. It is adversely affected or harmed by the presence of other species. Example, big tree and a small plant of other species. Big tree and a okay. Then पेनिसिलियम एंड बैक्टीरिया. अगर आपका थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो क्या लेते हो आप? What tablet you will take? Azithromycin. What is azithromycin? Again it's a fungus. It will kill the other bacteria. So उस फंगस के लिए कुछ लेना देना नहीं है. It just releases chemicals. जो इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया से, that will get out. Okay. Penicillium and bacteria, azithromycin and bacteria. Okay. So these are the examples. Now there is one more, reaction which is called as neutralism, and इसका है 0-0. Okay. So when two species interact with each other, none of them is getting benefited, none of them is getting harmed, and it is 0 for both of them. What is an example? Human and cat. किसी को कुछ नहीं हो रहा है. So humans are getting comfort और cat की वजह से. और अगर आप पाला नहीं है तो आपका पूरा दूध पी जाएगा हर दिन आके. You will be minus and there will be plus. It's a kind of parasitism. अगर पालतू नहीं है तो. अगर पालतू है तो आप उसको खाना दे रहे हो, they are getting plus. चूहा पकड़ रहा है, हाँ, म्यूचुअलिज्म. कुछ भी हो सकता है. See, generally some ecologists think that न्यूट्रलिज्म नेवर एग्जिस्ट इन नेचर. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दो स्पीशीज इंटरेक्ट करे और इसमें से कोई
result now. It will be any one of these interactions. If these are not coming, then those two are not interacting. अगर इसमें से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो वो दोनों इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे. ओके, सो दैट्स व्हाई सम पीपल नेवर एग्री दैट न्यूट्रलिज्म होता भी है, बट सम इकोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट नहीं नहीं ऐसा कुछ होता है. जब दो स्पीशीज इंटरेक्ट करते हैं तो some kind of relationship will happen where none of them is getting benefited, none of them is getting harmed. So they give example of tarantula and cactus in deserts. Deserts में tarantula क्या है? Big hairy spider जो हैरी पॉटर में होता है ना, बड़ा स्पाइडर बहुत सारा हेयर्स के साथ. So those spiders एंड कैक्टस वो हमेशा साथ में रहते हैं. कैक्टस को स्पाइडर से कुछ ना लेना देना, ना प्रॉफिट है ना बेनिफिट है ना लॉस है, और स्पाइडर से कैक्टस से कुछ लेना देना नहीं है, पर फिर भी साथ में रहते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल व्हिच दे गिव. अगर आपको कुछ मिला तो लेट मी नो टुमारो. थोड़ा सर्च कर लो इंटरनेट पे. फॉक्स, तो फॉक्स को कुछ लेना देना नहीं है, शेड मिल रहा है ना उनको, धूप से बच रहा है, रेन से प्रोटेक्शन मिल रहा है, दे आर गेटिंग प्लस. मे बी इट इज कमेंसालिज्म. हाँ, सर्च फॉर इट. ओके, अभी नहीं, बाद में घर जाके. वही तो समझ में नहीं आ रहा है. दैट इज द रीजन व्हाई दे से देयर इज दिस इज द न्यूट्रलिज्म. साथ में रहना कोई हेल्पफुल नहीं है तो भी वो रह रहा है. कोई प्लस नहीं मिल रहा है, कोई माइनस नहीं मिल रहा है, बट दे आर डूइंग इट. सम इकोलॉजी से दैट हम लोग समझ नहीं पा रहे, देयर शुड बी समथिंग, वी नीड टू डू मोर स्टडीज. ओके, सो दैट इज द थिंग. चलो, दैट इज अबाउट इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस. एंड एज आई प्रॉमिस्ड मैं वो क्वेश्चन दिखाऊंगा. क्या था? Nidarians. चलो वेट फॉर अ सेकेंड, मैं अपना इसमें ही लिखाऊंगा. Classification. ये एक क्वेश्चन था. इट वॉज फ्रॉम फंगाई, किंगडम फंगाई. Some mushrooms have medicinal properties, some mushrooms have psychoactive properties, some mushrooms are insecticidal. ये था. This was again question from 2022. Okay. And कल जो बात कर रहा था ना, this was the question. Which of the above can be cultured in artificial or synthetic media? 2021 prelims में था. Okay. So what is the answer? Bacteria and fungus only, no virus. Virus needs living host. ये भी 2021 में था, ये भी था. Okay. This one. This was a question from 2021 prelims. Okay. So symbiosis में आप एग्जाम्पल जो लिखे हैं ना, उसमें लिख लो निडेरियंस, फंगा एंड प्रोटोजोआ. ओके, सो निडेरियंस आप लिखे हैं ना उसको, फंगा एंड आल्गे, दैट इज अ क्या हो गया, फंगा एंड आल्गे, प्रोटोजोआ एंड टर्माइट्स. ओके, सो द आंसर इज ऑल थ्री, 1, 2 एंड 3. एक क्वेश्चन था, उसको स्टार लगा के
प्रीलिम्स 2021 लिख लो, ताकि यू डोंट फील दैट ये पोर्शन जो कर रहे हैं ये यूजलेस है। ये बस 2 साल पहले यहां से क्वेश्चन आ चुका है। इट्स नॉट अ लाइक यू नो क्या बोलते हैं पप्पू पप्पू टॉपिक नहीं है। इस पे ध्यान देना पड़ेगा। जब आप स्टार लगा के प्रीलिम्स 2021 लिखोगे ना, तो जब आप रिवाइज करना बैठोगे 50-60 साल के बाद, तो याद आएगा कि यहां से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे ध्यान देना है। ओके ओके, गॉट इट। सी देखो, ये बहुत ज्यादा निडेरियंस का मैं दिखाता हूं, आई कुड डू। सी देखो 2016 का क्वेश्चन है, लाइकन्स जो हमने लिखे थे, which are capable of initiating ecological succession even on bare rocks, is actually symbiotic association between algae and fungi. जब आप PYQs करेंगे ना, एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस डायरेक्शन में पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ओके, सो डोंट ब्लाइंडली सिट फॉर प्रिपरेशन अनलेस डूइंग PYQs। निडेरियंस का बताता हूं। सो जो प्लांट किंगडम का बता रहा था, सो प्लांट किंगडम इज, ये आल्गे है, दीज आर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ओके, देन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सो दीज आर द 5। एंड अगर हम एनिमल किंगडम में आए तो वी हैव दीज मेनी फाइलम्स। एंड जो सेकेंड फाइलम है, फाइलम निडेरिया और कोलिएंट्रेटा, इसमें एग्जाम्पल आता है कोरल पॉलिप्स और जेलीफिश। ओके, सो हर एक फाइलम का ये स्पॉन्जेस जो है सबसे पहला है। दिस इज ऑल्सो अ कॉम्पिटिशन विथ कोरल पॉलिप्स। ओके, स्पेस के लिए कॉम्पीट करता है। देन यू हैव निडेरिया। ओके, सो दिस इज पॉलिप, कोरल पॉलिप ऐसा दिखता है, एंड दिस इज जेलीफिश, ये इसका एग्जाम्पल है। ओके, सो यू नो दैट निडेरिया मीन्स पॉलिप। देन ये जो वेट मोलस्का, मोलस्का में जो एग्जांपल्स है, सो इन दिस एग्जांपल द एग्जांपल इज पर्ल ऑयस्टर, के जिसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, वेयर इज द क्वेश्चन, या 2021 में। सो दिस इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर। के ऑयस्टर इज अ फिल्टर फीडर। बाकी कैटफिश, पेलिकन एंड ऑक्टोपस जो है वो चल सकता है, दे कैन मूव एंड दे कैन हंट एंड ईट। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज। सो आप इसको प्लीज पढ़ लो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ पार्ट ऑफ जनरल साइंस, आप सब पढ़ चुके हैं, दिस इज नॉट न्यू। 6th 7th NCERT का सब्जेक्ट है, जो मैं दिखा रहा था ना, ऑल दीज थिंग्स, फंगस, बैक्टीरियाज, वायरस जो भी है, ये बायोलॉजी है, जनरल बायोलॉजी, जो 5th 6th स्टैंडर्ड में। जनरली आप लोग स्किप करते हो ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्किप करते हो। ओके, जनरली पीपल डोंट डू स्टडी, बट बिलीव मी, बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। 2021, 22, 23, हर साल, एवरी ईयर देयर आर क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट। डोंट इग्नोर। ओके, एनीवेज, या ये क्वेश्चन इधर ही था, सॉरी मैंने डाल दिया था, मैं देखा नहीं इसको। डिडेरियम फंगन बोलता था। So write down, they answer this question. Do you want to see the previous questions जो अभी हमने पहले आंसर किया था? Okay, quickly answer this. Tapeworm and cat have parasitism. Okay, organism which one is benefit and another is unharmed. Commensalism. Frog eats a grasshopper. Predation. Okay, two species, one benefits, another is unharmed. One is benefit and another is harmed, parasitism. Okay, so that is the thing, right? Chalo, answer this question. Okay, who says A? B. Okay, C, D. बाकी सब क्या स्किप करेंगे?
So the answer is B, ecotone. Okay. So the next topic is ecotones. Write down this. क्या हो गया? चलो ठीक है, देखो क्लास में पहले या फिर मत ही आओ, आने के बाद खत्म होने तक बैठ जाओ, बीच में नहीं उठा तो मैं डेफिनेटली पूछूंगा. ओके, सो इफ यू आर गोइंग टेल मी द रीजन व्हाई यू आर गोइंग, अदरवाइज डोंट कम. आई डोंट माइंड. मैं कल नहीं पूछूंगा क्यों नहीं आया कल, बट वंस यू कम रेस्पेक्ट एंड सिट. क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, ऐसा नहीं कि मतलब डालना जरूरी है. सब टीचर बोलते हैं कि पीवाईक्यूज कर लो. ओके, पर पीवाईक्यूज क्लास में कराना इज अ डिफिकल्ट टास्क विच आई एम डूइंग फॉर यू. सो प्लीज रेस्पेक्ट इट एंड बैठो. सो आप यू नो देखो, एग्जामिनेशन में 80% क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट होना इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, तो क्योंकि एग्जाम के बाद भी मैं भी इधर ही रहूंगा, इस बार भी प्रीलिम्स होगा, उसके बाद भी वी विल बी प्रोबेबली मीटिंग. तो यू सी द क्वेश्चन पेपर, आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, उसमें आपके नोट से नहीं है तो आई वुड बी आंसरेबल. तो इसीलिए इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता हूं कि ओपनली बोलो कि 80% मेरा नोट से आएगा. एंड इफ आई प्रॉमिस देन आई विल डू एवरीथिंग इन माई पावर टू मेक श्योर दैट ओनली गुड स्टफ गोज इनटू योर नोट्स. कचना नहीं रहेगा आपके नोट्स में. Okay, there will be no anything which is unwanted. Okay, so सिर्फ और सिर्फ exactly जो यूपीएससी स्टैंडर्ड्स के लिए रिक्वायर्ड है वही रहेगा, एंड यू जस्ट नीड 1 or 2 divisions, that's it. Okay, so anyways, see the next concept is ecotone. See, ecotone is a area or zone of transition between 2 or more diverse communities. से देखो, अगर 2 कम्युनिटी है, वन देर इज, सोचो कि फॉरेस्ट है. ओके, देर इज फॉरेस्ट एंड अनदर इज देर इज अ एग्रीकल्चर फील्ड. फॉरेस्ट के बगल में एक खेत है. सो वी हैव अ फेंसिंग हियर, है ना, बीच में हम लोग एक फेंस डाले हैं, एंड वी नो दैट यहां से फॉरेस्ट शुरू होगा और यहां से एग्रीकल्चर फील्ड शुरू होगा. देयर इज अ प्रॉपर लाइन और प्रॉपर बॉर्डर विच सेपरेट्स 2 डिफरेंट इकोसिस्टम्स. ओके, 2 डिफरेंट कम्युनिटीज. फॉरेस्ट में अलग कम्युनिटी रहता है, एग्रीकल्चर फील्ड में अलग अलग कम्युनिटी रहता है. बट ये एक सिचुएशन है. बट इन सम केसेस व्हाट हैपेंस व्हेन 2 इकोसिस्टम्स आर वन बिसाइड द अदर. ये फॉरेस्ट कम्युनिटी है एंड से देयर इज a grassland community. Okay, so this is forest and this is grassland. So exact border नहीं रहता है. Okay, they'll be overlapping with each other. जैसे आपने यहां से वॉक करना शुरू कर दिया, you should start walking from here. आपको पूरा ग्रासेस दिखेगा. यहां पे आएंगे तो थोड़ा बहुत इधर 1 और 2 3 प्लांट ट्रीज दिखेगा. धीरे धीरे आते आपको ट्रीज का नंबर ज्यादा होगा, ग्रासेस कम होगा. जैसे यहां आएंगे आपको बहुत कम ग्रासेस दिखेगा, बहुत ज्यादा ट्रीज होगा. इसके बाद आपको सिर्फ ट्रीज दिखेगा. वैसे आपको यहां से जाएंगे तो ट्रीज, थोड़ा बहुत ग्रासेस दिखेगा, थोड़ा ग्रासेस ट्रीज कम होगा. सो देयर इज अ प्लेस विच इज अ ब्लेंडिंग और ओवरलैपिंग इन ओशंस. एक जो पॉइंट होता है ना जिसमें रिवर्स एंड ओशंस विल, जहां नदी एग्जैक्टली जाके समंदर से मिलता है. सो व्हाट डू यू कॉल दिस? एस्चुअरी. ये डेल्टा है. डेल्टा नदी के अगल बगल में होता है. इट्स नॉट दिस थिंग, यू नो, दिस इज द एरिया वेयर द एग्जैक्ट रिवर टचेस द ओशन. रिवर में कौन सा पानी रहता है? फ्रेश वाटर. एंड ओशन में सी वाटर. इसमें क्या होता है? वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ब्रैकिश वाटर. इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर, दोनों का मिक्सचर. इट्स कॉल्ड एज ब्रैकिश वाटर. ओके, दैट इज एन एग्जांपल. मैंग्रोव सुना आपने? ये जो है ना, सो ये लैंड होता है एंड वी हैव
ओशन. सो ओशन जो है in a single day sometimes it will come till here, then it will recede back till here. कभी आप यहां बैठ सकते हैं बीच में, कहां आपको यहां बैठना पड़ेगा. सो दिस एरिया इज कॉल्ड एज लो टाइड एंड हाई टाइड जोन, जो कभी पानी के अंदर रहता है जमीन, कभी ओपन रहता है, पानी नहीं रहता है उसमें. ओके, दिस एरिया इज कॉल्ड area between high tide and low tide. So some of the trees will grow in this area and this is called as mangrove is a ecotone. Few trees which grows here have adopted to grow in a dry condition for some part of the day and they will be under the water for some part of the day. So these are called mangrove trees and mangrove is a ecotone. Okay, so that is an ecotone, right? So write down this. Ecotone, it is an area or zone of transition. It's an area or zone of transition between two or more diverse communities. Okay, two or more diverse communities. Two or more diverse communities. It is a gradually blended interface area. It's a gradually blended, मतलब दोनों communities का blend होता है. Okay, overlap होता है, overlapped area. It's a gradually blended interface area in which the species from each community, will be found as well as some unique local species, as well as will be found as well as some unique local species. उसका मतलब क्या है? देखो, there are some fishes which are found in rivers, जो सिर्फ फ्रेश वाटर में होता है. There are some fishes which are found only in saline water. पर यहां पे you can find both this fish and this fish. जो फ्रेश वाटर में वो फिश भी यहां पाया जाता है, जो सलाइन वाटर में वो भी पाया जाता है, प्लस कुछ ऐसा फिशेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एस्चुरी में होंगे. नाइदर दे विल बी फाउंड हियर नॉर दे विल बी फाउंड हियर. सम यूनिक लोकल स्पीशीज. यहां पे भी कुछ ऐसा ऑर्गेनिजम्स होता है जो फॉरेस्ट में है वो भी इधर है, ट्रीज भी है, यहाँ ग्रासलैंड में वो भी है, पर यहां पे कुछ ऐसा लोकल स्पीशीज होता है वो सिर्फ और सिर्फ एकोटोन्स में पाया जाता है. नाइदर दे विल बी फाउंड इन फॉरेस्ट नॉर दे विल बी फाउंड इन ग्रासलैंड. ओके, so that is what it means. It has the communities from both the flanking ecosystems plus some unique species जो सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पे पाया जाता है और बाकी दोनों में नहीं पाया जाता. Okay, so that is what is ecotone. Okay, now answer this question. Okay, इसके बाद हम स्टॉप करते हैं. देखो क्वेश्चन से यूज हो रहा है कि लाइक आर यू गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड? इज इट हेल्पिंग? चाहे तो मैं निकाल सकता हूं इफ यू वांट इट. चाहे देखो, सब भूखे, गलत गलत चीज मत बोलो. So the tendency of increased variety and density of a species of a community in an ecotone. Okay, who says A? B? C? D? Biodiversity effect. हाथ उठाओ, हिम्मत से उठा. ओके, चलो कल मिलते, कल देखते. हाँ, आंसर चाहिए? कल 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 देख.
सब्र का फल मीठा होता है, उसी इसमें आ जाओ, इसका आंसर क्या है? हाँ, सर्च कर लो, एटलीस्ट उस बहाने तो पढ़ोगे। ओके, सी यू टुमारो।